in the Mandvi where we're reporting from ground zero. This is the epicenter of one of the epicenter, after Jakhau, where the landfall is expected and which will cause maximum damage over here. And definitely, the wind velocity is consistently increasing, the climate condition is worsening, and in fact you can see around, the wind is blowing along with the sand of the sea coast, and this will intensify, and this is a signal that we are inching towards hitting the cyclone at around 6:30 p.m. predicted by IMD, and this situation will worsen, and the skies are cloudy, and heavy to very heavy rainfall is being witnessed here in Mandvi, and we are reporting from ground zero at Mandvi, and definitely the goal and only agenda of the administration still remains that safety and security of the people around the coast is paramount, and that's the reason all preventive measures are being taken in place, and they have been shifted to shelter homes, shelter camps, which are made in the educational institution and primary schools in the nearby area, far away from the beaches. And definitely, what will be the impact? This is the wind speed currently we are facing. This will multiply as we reach 6:30 p.m. when the actual landfall is expected. And this is Mandvi, one of the epicenter. My colleague was reporting from Jakhau, which is another epicenter, and definitely these two areas which will have the maximum impact, or you can say aftermath of the cyclone, will be witnessed over here and in Jakhau. And definitely, administration is ready to face any eventualities. NDRF team, SDRF team, in coordination with local administration as well as Air Force, Navy and respective paramilitary forces, are closely monitoring the situation, and they are ready for any eventuality. But still, the focus remains that we face minimum damage and there shouldn't be any kind of casualty. But as a preventive measures, around 5,000 hoardings from across the 8 districts have been removed, and this is something which is very much important here in Mandvi. लाया गया है, और देखिए 2 कदम भी चल पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इन्हें जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने बचाकर यहाँ लाए, और मेरे ठीक सामने जो वर्दीधारी पुलिस भी मौजूद है वो भी मुझे कह रहे हैं कि आप ये छोड़कर यहाँ से ना जाएं। और ऐसे में अगर मैं इस एरिया के बाहर जाती हूँ तो विंड प्रेशर इतना ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पकड़ने के लिए भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सहारा लिया जा सके। 2 लोगों ने जिन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, उनका क्या हाल हुआ आपने देखा? Well, clearly the situation getting increasingly dire in some of the areas that will be affected as a result of the landfall, which is expected any moment right now. The wind speed is intensifying, expected to reach almost 155 to 170 kilometers an hour. We have some more ground reports coming in. देखिए, पूरे गुजरात और खासतौर पर द्वारका के लिए आज का दिन बहुत क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि अब आईएमडी के मुताबिक आज दोपहर या शाम तक किसी भी वक्त गुजरात के तटों से टकरा सकता है बिपरजॉय। ऐसे में मैं इस जगह मौजूद हूँ जहाँ एक तरफ समुद्र का तांडव आप देख पाएंगे कि पूरी तरह जमीन के आसपास समुद्र का जो पानी है उसकी लहरें पिछले 2-3 दिन से बहते हुए यहाँ तक आ गई हैं, जहाँ अक्सर लोग बैठकर समुद्र का नजारा देखा करते थे। और आप यहाँ देखेंगे अगर, तो आपको तस्वीरें और उसकी भयावहता का अंदाजा इस तरह हो जाएगा। वाटर लेवल, अगर आप झोपड़ी नुमा उस कंस्ट्रक्शन को देखें तो दरअसल वहाँ पर जो टूरिस्ट है वो आकर बैठा करते थे, दुकानें लगा करती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह पानी में समा चुका है। सुनसान और वीरान पूरी तरह से पड़ा हुआ है द्वारका देवभूमि। और अब ठीक हमारे पीछे आप देखेंगे द्वारका का वो ऐतिहासिक मंदिर जिसके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, उसके ऊपर फहरा रहा वो पताका, धर्म पताका ध्वज, जो कि पिछले 3 दिनों से बदला नहीं गया है। देखिए, अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर क्या संकेत मौसम देना चाह रहा है, लेकिन द्वारका के लोगों को पूरा यकीन है कि ठाकुर जी उनकी पूरी रक्षा करेंगे। बिल्कुल, इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो शुरुआत में मांडवी से ही करता हूं। कुछ देर पहले हमने अभी खबर दिखाई थी मांडवी शहर के अंदर की, जहां लोग अभी असमंजस की परिस्थिति में हैं, और मांडवी बीच से लगा हुआ है मांडवी पोर्ट, यहाँ पर भी परिस्थिति लगातार विकराल बनती जा रही है। आप देखिए, ये जो पूरा बंदर है, ये
बंदरगाह है, बड़ा बंदरगाह है। सामने की ओर अगर आपको रेड कलर का एक आगे दिख रहा हो लाइट हाउस, छोटा लाइट हाउस है, सिक्योरिटी पॉइंट उसे बोलते हैं, वहां तक वो बंदर जाता है और वहां तक पूरी सिक्योरिटी रहती है और यहाँ पानी कभी नहीं आता। पर आप यहाँ नीचे देखिए, ये पूरा पानी यहाँ पे आ रहा है, समुद्र का पूरा पानी ये देखिए यहाँ आ चुका है और पूरी उफान मारती लहरें पूरे अपने वेग के साथ यहाँ पर हिचकोले मारता समुद्र और सनसनाती बहती हवाएं इस बात को बार बार बता रही हैं कि आने वाला टाइम जो कुछ घंटे हैं वे कितने कठिन होने वाले हैं। हवा का तो दबाव है ही और पूरे पोर्ट के ऊपर पानी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ जो परिस्थिति है वो ऐसी और ये बढ़ेगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है, जिसे हम कहते हैं कि ये सिर्फ ट्रेलर है। ये ट्रेलर अब दिख रहा है और इतना विकराल दिख रहा है। समुद्र की लहरें जब यहाँ इन किनारों से साहिल से टकराती हैं तो देखिए कैसे विकराल रूप में धारण करती है। कल यहाँ जब हम थे तो समुद्र इतना शांत था कि कोई अगर आज ये दृश्य देख ले तो वो शायद चकित हो जाएगा कि कैसे मौसम अपना मिजाज बदलता है। ये देखिए, ये पूरा पानी यहाँ टकरा करके आता हुआ और बह करके बंदर पे आता हुआ, ये लहरें कम से कम 12 से 15 फीट ऊपर उछल रही हैं। ये बहुत बात ज़िरे गौर है यहाँ पर कि 15 फीट ऊपर उछलती लहरें और बंदर के पास में आती हुई। From Mandvi, and situation is getting deteriorated and more, as the wind speed is continuously multiplying as well. You can clearly see how the wind speed is multiplying, and in fact the sand from the coastal area is along with the wind is moving towards us, and definitely the situation is getting difficult and more as the advancement of cyclone landfall is expected is at 6:30 p.m. and definitely the situation out here is getting difficult, but this is how the nature behaves. Nature behaves on its own, and definitely as predicted by IMD that apart from 150 kilometers per hour it can intensify further and it can go up to 175 kilometers per hour also, and you can imagine the extent of damage that it will cause to Mandvi and to Jakhau when actually the landfall happens at 6:30 p.m. So definitely, all preventive measures have been taken, and the local administration is on the alert mode. As we were reporting in the morning from the Mandvi beach, where they, as the high tide started, they told us to move out from there. Later we went on to Mandvi Port. From there also we were told to move away, and we all were out. Now we have managed to come to a location so that we can bring you the live updates, how the nature is changing its course and preparing for the massive cyclone that will be hitting on the coast of Mandvi and Jakhau nearly around 6:30 p.m. as predicted by IMD. And definitely, no loss of life is the priority of the government, and definitely on the other side minimum damage is something that is being focused, but what extent of damage it can cause is something that only we can understand after the massive landfall that will take place around 6:30 p.m. and we're reporting from ground zero, Mandvi, one of the epicenter which will be the worst impacted and affected after the landfall happens. So definitely all the people across the coastline have been shifted to a safer location, and on the other side NDRF, SDRF are stationed in Mandvi and across the 8 districts of Gujarat where the cyclone will make its effect after the landfall, and necessary arrangements are being done and situation is being closely monitored and ready for any type of eventuality. So reporting from ground zero here 4 times now. Back to you. Be safe, Abhishek. We have Mr.